Good morning, everyone. Welcome to the Trading Essentials webinar. This is our first webinar. Hope I'm audible. Anyone can confirm? Yes, you are audible. Yes, I am able to hear you. Okay. Thank you. So, seeing the participants, I would be speaking in Hindi and English both. So, wherever people need more explanations or something, do let me know. I will be happy to explain you things which I'm going to present. So let's dive in. Let me stop my video, and I will share my screen with you, and then we can go forward from there. Okay. Okay. Welcome back. So I was telling you the name itself, Trading Essentials. There are a lot of literatures, YouTubes already available in the market, but the thing is, what one need to focus in this market, and what need to know before one execute any trades or enter into any investments. So our purpose over here is to help each and everyone to differentiate that particular thing, and more or less one need to have that trading essentials, the key parameters one we need to see. So that's what our purpose is. We will help you identify the major essential things and eliminate the things which is not necessary. Okay. So and this is the agenda. So first of all, the foremost requirement thing, are you ready for investing? What are the basic things needed before we start actually investing? And then in stock market, what are the different avenues to invest as well as trade? And I will help you few essentials for stock selections, whether it is long-term, short-term, or trading, including options. This would be more or less a basic primer to the things which you can start off and then take it forward. And in the end, we will take the Q&A sessions which people have put in during the filling the forms. So just a small brief about myself. I've been with the market since last 15 years, and I have 2 master's degrees. I've done MBA in finance as well as master's in real estate. I'm also a SEBI registered investment advisor. So this helps to justify or just to clarify that this will worth your time. Okay. So let's directly get into our agenda. So what is foremost requirement before you start investing or even trading? Okay.
So coming back to our presentation, which says like why one need to, what one need to check before he or she can invest in the markets. So for foremost requirement for anyone to start investing or risking our capital to the market is this, wherein we primarily focus on the protection of the capital. In terms of capital, you mean to say yourself, your family, you need to have that protection for yourself, which will help you give some cushion when the market goes against us. So what do you mean by protection? So we'll go in details in each of this in the next slides. And then we come to the preservations. How do you preserve, or how do you save taxes? And eventually we will talk about how wealth creation can happen. And finally, you will reach the financial freedom or the nirvana. Okay, so let's dive into these three major topics now. So these are the major topics which is needed for before you start your investing journey. So I know most of the people must be knowing all these things, but it warrants a repeat of this so that whenever the market turns against us, it will be very helpful and you would have a lot of questions for it. The foremost is like whether you have a term insurance or not, which is very important. It should also have a cover of critical illness, and which will be equivalent to 7 to 10 times of your annual income. Whether you're in business or job, your 7 to 10 times annual income should be there. Are you all with me now in terms of this, or should I slow down or something? Can you help me with that? Okay, thank you, Gavin. So the next thing, what after term insurance is medical insurance. Is it provided by the company or you have self-funded? I would always advise, even if the company has provided you the insurance, medical insurance, you still need to buy your own, because most of the time what happens, whether we are changing a job or something happens, or there's some major policy changes in the company, and at that particular duration or the time window, probably we encounter something emergency at a home or on ourselves. So it's better to have your own medical insurance things. Last and foremost of this protection is the emergency fund. At least you need to have a 6 months expenses. People would have seen what has happened during the COVID times. And that's the reason I've increased that period from 6 to 9 months. Normally 6 months is more than enough, but nowadays, because of so much uncertainty in the world, in terms of whether it is COVID or war, we don't know what is going to happen next in terms of a job or businesses. So might as well one have at least 6 to 9 months of expenses, either in a saving account, fixed deposit, recurring deposit, or in a liquid fund. Yeah, I know that these are all not so great in terms of interest rates or return perspective, but it will always help you when there is something emergency which comes up. Okay, so now people will ask like, okay, we can do this, but at the same time there are different avenues which is available. Probably instead of putting my money with my State Bank of India or ICICI or HDFC Bank, I can do some chit funds or cooperative banks for higher interest rate, but that is not advisable. Why? Because all these things are not a good way, because what you are trying to do is to save money for your emergency. And probably if you have put your money into chit funds or cooperative banks, they are not so regulatory, and plus there are high chances that they will default, or to whom they give loan we don't know. So probably there are very high chances that your money which you have kept it for emergency, at the time of emergency you won't get it. That's one reason we should avoid this. Again, in terms of insurances, people will should not get into the endowment or money back policy or the ULIPs, because all these things are not required. Because what is important is to cover the risk, and all these endowment plans, money back plans are basically gives you guarantee in terms of return, but they are not so great in terms of covering your risk cover. Coming next to child and retirement plans and Sukanya Samriddhi, to a certain extent one can think of, but child and retirement are just like they're selling you fear or the dreams, which is not so required, and it's not value accretive in terms of returns. More or less 5 or 6% returns one can expect out of that.
And again, one should avoid personal loans and credit card loans. These are the disasters for any financial plans. In terms of preservation, so out of the our base thing of protection has been taken care, then one need to preserve. So in how one preserve it is, it completely depends on where you're putting, how you're saving your taxes, and a bit of diversification at this stage is important. Mind you, we are still not started off investing as of now, because this is necessary. So tax saving can happen either to home loans. First home is not an investment. One should take into consideration that. Yeah, eventually you can use it as a top-up loan and everything if it is necessary, but don't consider it as an investment. And you will have that ETC benefit over there. Similarly, if you already have home loan, you can also avail PPFF. PPFS is a very good instrument for a long-term benefits, and with a no-brainer. I mean to say, at the time of investment, you save 30% of as your taxes. At the time of withdrawing, or the interest is also tax-free, and also the withdrawal is tax-free. So this is one of the best instrument one should have in their portfolio, irrespective of other instruments, other investments you have or don't have, but at least you can start off with this. Fixed deposits is also good, but for tax serving purposes, mutual funds, ELSS is also good. But PPFF, I would give more weight to PPFF compared to the other ones. Again, one can also invest into gold bars and coins, or gold ETFs would be good. With gold ETFs is nothing but it would be in demat form. You can buy it online, like the way you buy stocks. Why I'm asking you to buy gold bars and coins and not bonds and ornaments? Because bonds and ornaments by basic definition, in India, we are very sentimental, emotionally attached to it. We are not going to sell ornaments whenever the prices of gold go up. So don't consider ornaments as an investment, and don't consider ornaments into any of your financial planning thing. Might as well just ignore it, treat it as an expense, and don't treat it as any ornaments as an investment. Gold bonds also is not advisable. The sovereign SGB bonds, which is quite popular in the market, because what happens, it is completely locked in terms of 5 or 8 years, it is locked in, and what you will get is just 2% interest, and the cycle of gold will go up and come down, and you won't be able to time it properly. So even that is not advisable in financial planning. And the last is mutual fund and real estate. At least one can start with an SIP, which will slowly build your create some corpus for yourself, which will actually give you a cushion when you start investing into the stock markets. And buying a house is a good one. Again, just like ornaments are not treated as an asset, personal vehicles are not treated as an asset. So don't consider it as a complete expense. So don't consider it as in your investments. And now, after having protection as well as preservations into considerations, then we can focus on wealth creation. And from here, your journey in stock market starts. Only after you have completed the first two stages, you should think of in creation, or think of stocks, mutual funds on a larger scale. Here, what you can do in terms of wealth creation, normally people start with mutual funds. One can start with large cap, multi cap, mid cap, and balanced fund. What are this? So large caps are basically top 100 companies of India. Multi cap is mix of both. I mean to say large cap, mid cap, and small cap. And mid cap is like ranked 101 to 200 of India's largest companies. And balanced fund has a equity as well as debt portion. Again, in mutual funds, don't go for small cap or any sector fund. Okay, because people would say, FMCG is doing good, or metals are doing good, MNCs are doing good, or even for now, in last 1 year, people were quite gung-ho about NASDAQ stocks, investing in NASDAQ or China or any foreign equities. Just don't go for it, because all these are timed based, because one need the way one times the stock entry and exit. In a similar way, small cap and sector fund need to be timed, and and the kind of background we have and how much amount of research we do, it is quite difficult to time all this thing. And mind you, there is a research on this.
There is hardly the difference, the returns difference between the two, say probably a multi-cap fund, which has this large cap as well as mid cap, and a particular small cap fund. That's not much. It's hardly 0.5% difference. But the risk attached to a small cap or sector fund is like 2% higher compared to the risk attached to a normal mid cap or a multi cap or a large cap fund. So based on risk reward, one should not get into the small cap or sector fund. Coming back to the stocks, okay, this is one of the best things when one has a individual investor one can do. They can start identifying a particular group of stocks. Say for an example, HDFC Group. So you have HDFC Bank, HDFC Limited, HDFC AMC, or HDFC life insurances. You can focus on, okay, HDFC over a period of last 20-25 years has given a good return. Let's focus on those stocks. Do stock SIP, start a stock SIP in your Demat account. Given instructions, okay, every 10th of the month, invest buy two shares of all these 5 group companies of HDFC. Similarly, you can have your Tata Group. Similarly, any other group which you like, or you can have your own stocks, say the evergreen stocks of Pidilite, Nestle, Asian Paints, Reliances, all of this. You can have your own buffet of stocks, and then you can just start, but don't have more than 5 or 6 stocks in this, because eventually we don't want to have a mutual fund into our stock portfolio. So let's have only 5 or 6 which will help you, and do it for at least 5 years. So that will give you definitely a good return in terms of CAGR returns without any much of problem in terms of management issues, any uncomfortable positions. Nothing will happen in this. These are the proven track record companies. So just focus on this. And what will happen in this, it will be, since it will be stock SIP, you are already given the instructions to the banks or to your Demat account. Every 10th of the month we execute these transactions. So your decisions would be completely unemotional, it will be unbiased, and you will be completely disciplined in that. Why? Because otherwise you will see, array, aaj market zyada gir gaya, let's not buy, let's wait for let's wait more time for it to fall, and then we'll buy eventually. But that won't happen. No one knows where the top is and where the bottom is. It's only in the hindsight people will say, okay, ye to top ho gaya tha, ye bottom ho gaya tha. And real estate investments can also be done if provided you have everything done. So currently we have something known as real estate investment trust. See, buying a house, second house is good, but buying a commercial property at the first go, especially in India, where the component of the black and the white is quite higher, especially in commercial property. So one can think of investing in real estate investment trusts. These are nothing like, it's similar to a stock. So you're buying a DLF stock. Instead of DLF stock, you can buy real estate investment trust, which is again listed on the market. And what you get into this is you get a fixed interest rate. I mean to say, they call it dividend. Whatever the income is generated on the commercial property, say there is something known as Mindspace Business Park, there is MSC. Both of these are listed. You can buy it online like a share, and you will have capital depreciation when the property prices of, say, Mindspace Malad increases, or you can also have higher dividends based on increase in the rentals of this particular properties. So this is also quite good instead of directly investing commercial property where you have to manage everything. Similarly, in the don'ts, again, don't go for the penny stocks, larger than life return schemes, or anything which says this will get double in 1 month, 2 months. This is the next story. We know the management. No. Just focus on the things which I've told over here. Do the stock SIPs. Future options at this stage is not required. Cryptocurrency is a debatable subject, and more so probably avoided as of now. Now, after having all these things, all your tick marks done in the first segment of the presentation in terms of protection, preservations, and wealth creation, then we can think of stock markets. So let me take you through different avenues, how one can invest and trade in markets, and few essentials which is required.
So in the stock market, you have cash or stocks, cash segment wherein you can buy. The way you buy stocks, you hold it for a few days, months, weeks, or year. There is something known as futures and options, which are basically contracts. They are not stocks. They don't give any dividends. And commodities. So futures and options and commodities are purely trading purpose. Cash can be traded as well as can be kept as a long-term investment. But futures and options and commodities cannot be kept for long term. It is just for short term, for swing trading. People who can give so much time and time for the market in terms of research as well as stay in the market during the market hours for benefiting the small ups and downs in the market. Speaking about cash or stocks, again, how do we identify this? So there are basically two major way in which one can identify a good stock. One is fundamental and another is technical. Fundamental analysis is nothing but you need to understand the business concepts. I mean to say what the business does, how they are doing, how the management is, whether they are good, bad, ugly, whether then you have to understand the other competitor of the company. You have to understand, analyze annual reports, financial reports, as well as demand supply of that particular product. One cannot be sure about any company unless and until understand this. One, people would normally say, okay, मैं तो long term के लिए invest कर रहा हूँ, but that does not mean you're giving. So what do you people say? मैं 3 4 5 साल के लिए रुकने के लिए तैयार हूँ, but that does not serve the purpose unless until these things are addressable. So for an example, if someone buys, okay, I will come on that example next in the next slide. And coming back to the slide, technical analysis is nothing but study of charts, price and trend analysis. Again, why technical is needed along with fundamental? So normally there are debate in the market in terms of, okay, may say fundamental analysis to may say technical analysis, but actually both need to be worked together. I mean to say studied together. Fundamental analysis helps you identify the good businesses, but when to enter, when to exit is the decision is taken by technical analysis study. And this has been followed by all the fund managers, all the institutions in the market. It's not only we do it. So the study of both of this is quite important for you to create wealth, have a stock in a portfolio which will definitely deliver a good returns. So let's go to stock selection. Here we will speak about fundamental analysis. So what is the important filter in fundamental analysis? See, I told you about you need to understand the fundamentals in terms of competition, in terms of what are the business concepts, how is the management, understanding the business, the working, how it has been done, everything. But a very important filter which you can use from, you can start using it from day one, from today in itself. So first of all, what is important is the promoter shareholding. See, we are sitting outside of the company. We don't know what is happening inside the company. So the only big parameter or barometer for us is to identify whether the skin in the game of the promoter is there or not. And that is justified only by high promoter shareholding. So here I will give you an example of, say, DMart versus Future Retail. Both are into the same business of selling discounted grocery, everyday goods, everyday discount thing. But what is the major thing or a basic filter which you can see in this, a basic differentiation between the two is the business are the same, market is the same, they are located more or less in the same locality. But if you see, the DMart shareholding is almost about 70-75%, whereas Future Retail is just 20-25% shareholding of the promoter. But still people will run after Future Retail क्योंकि उसका price कम है. People will say, okay, Reliance is going to buy, and then probably it will have a big share and everything. But if the business is so good, why Future Retail will go away? He is not able to do something which DMart is able to do it. And DMart share, we will say, okay, 3,000 rupees share price. It had come at an IPO price of 299. It has already grown 10x. But that does not work. I mean to say, people will ignore DMart and will run for Future Retail. But actually, it should be the other way around. So that should be the first big filter.
Again, the second point is PE ratio. Normally, people who come on the lot of YouTube channels or the TV channels, they talk about a low PE, low PE. Low PE is not a. It is a good investment, but it cannot be applied blanketly to all the stocks. Probably there are stocks which are like micro cap or like penny stocks who are trading at 0.25 PE. Any money control website or any stock screener website, you can go and check. You will have all these very small companies trading at less than 1 PE, which means its its profit is less than its price. That's what it means. So how do we see P ratio? So in that sense, say for an example, again coming back to DMart. So DMart normally trades, say for an example, its long-term average, say last 5 years P, last 5 years average of its PE is around say 50. It trades at 50 PE, and currently it has come down to 40 PE. So probably this is the time you can invest into DMart, saying that okay, its long-term PE has come down below its current PE has come down from its long-term PE average PE. One can think of investing in DMart and wait for, because the businesses are in place, promoter stakeholder shareholding is quite high, so we can think of that. So this is how PE should be interpreted rather than just low PE. Low PE does not qualify as a good investment. The third part filter one can put is primarily we should focus on B2C companies, business to customer, which we can see in our everyday life rather than B2B. B2B is something which probably we don't see too much of it. B2C examples would be DMart is one of the example. HUL would be the example where you see all the products. Polycabs, we see the wires over here. We can Reliance to a certain extent, it is B2C as well as B2B, so it's a bit confused. It's a bit big conglomerate. So we cannot think of it. But there are a lot of small companies. Pidilite is just like Fevicol, Asian Paints. We all are these B2C companies because this directly sells to the customer, and we can see the businesses how it is growing in every. Bata could be another example. Relaxo could be another example of B2C. And mostly try to choose the sector leaders in the stocks, because leaders will always keep on growing and there won't be any problem to them. Example in car, yeah, definitely Tata Motors has come up, but if you see in India, Maruti has the largest market share in the sector. So in terms of Maruti's share price or Maruti's overall services, or even the way it has performed in the stock market is quite good, and it has remained sector leader since last a decade or more than a decade, and it will continue even the EV comes or whatever happens, it will continue to remain a sector leader. And try to avoid the penny stocks. Any stocks which you don't understand, any stock which you find on the paper or any WhatsApp group, just try to avoid it. Or even in that case, you can apply these filters, try to understand, and if it does not qualify to any of the four things which I have mentioned above, just try to ignore it. This won't be a good investments, and definitely it will be quite helpful if you again for the what I've said you earlier in terms of do stock SIPs in this manner, it will be quite helpful. And if you want to select your any stock, these are the major things you can invest. Now let's go to the next technical analysis. What is in technical analysis? What can be done? So important filter over here is there is something known as, I will just I will share my chart over here. It will be quite helpful. And just hold on.
ओके, आप लोग को ये दिख रहा है, मेरा चार्ट दिख रहा है? आर यू एबल टू व्यू द चार्ट? Okay. So over here, what I have added over here. So first of all, the whole idea is to go into the weekly charts. You can do this on Zerodha or any other software which you are using. Weekly charts सब में होता ही है. So time duration आप weekly ले लो. And this is I'm talking about for investing. Trading purpose के लिए नहीं बता रहा हूँ मैं. So majorly for investing और larger से एक महीने से ज़्यादा investing करना रहेगा तो आप weekly पे जाओ. In that over here, so there are different, normally this is candlestick. I convert it into Hikinashi candle. Hikinashi is nothing but ये last 4 candle का average लेके plot करता है. So this is how it happens over here. On this you put a moving average of 200-day moving average. 200 इसलिए because it almost covers a year. एक साल कवर हो जाता है इसमें. So let me put Reliance over here. Okay, and then you can have EMA 89 low and 89 high. 89 high का मतलब होता है कि normally 89 days का ये moving average है, exponential moving average, but हम high का ले रहे हैं instead of close. तो एक band तैयार हो जाता है. So this is a band. EMA 89 is a band over here. What happens is, see this place. What has happened? Stock in December 2019 has fallen and came and took a support at 200. The black line is 200-day moving average. It took a support over here. Then it made a small comeback, and once it crosses this, the band, the purple and the blue band, from here you can take a trade with this as your stop loss, this place as your stop loss, and you can eventually keep on holding it till the place it turns red over here. Okay, what is happening over here at the top? It's like 1, 2, 3, 4 weeks, so 5 weeks, almost a month. It was trading in the same range. Why we should hold over here? Because just 2 weeks. इतना ऊपर जाने के बाद थोड़ा तो वो सांस लेगा, and after that ये एकदम रैली में गया, और फिर after this like 4 weeks, मतलब almost 8 months. So there is something which is happening over here. So probably you can think of exiting probably over here at the low of this particular thing. So this, ये जो बड़ा कैंडल था इसके लो पे जब भी आएगा तो आप वहाँ पे एग्जिट ले लेना. So this is the filter which I would propose to you guys, because let me, yeah, can you see the presentation again? So in this the filter which I'm talking about is Hikinashi candle, weekly time frame, price above should be about 200-day moving average, price above VWAP एक है, but that is only works for intraday, and volume, the today's volume should be greater than 10-day average volume, and 89-day moving average ka band. So this is a small, very basic in terms of understanding. If someone tells you, okay, ये stock buy कर लो आप, so अगर वो ये criteria fulfill नहीं कर रहा है ना, so try to avoid it and just wait for the next opportunity when it gives. Okay, the screen is over here now. Now recently काफी लोग जो अभी चल रहा है मार्केट में, IPO मार्केट, बुल मार्केट में IPO मार्केट बहुत चला. So IPO मार्केट में कब अप्लाई करना चाहिए, and what are the major filters for that? So first of all you have to ask yourself, is it a bull market? यानी मार्केट में एकदम तेजी चल रही है, कोई भी स्टॉक within a day or two or within a week 10-20% रिटर्न दे रहा है, वो दिखना चाहिए. And you also identify, you also have to check whether how many months we are into this bull market. If we are into like almost 6 महीना हो गया है, bull market चल रहा है, and फिर IPO आ रहा है, तो उसको थोड़ा avoid करना चाहिए. You should avoid those period where the already many IPOs have already come and gone in terms of the returns which people are making. Everyone on the street is making money in the IPO.
The other thing is whether the promoter who is selling, whether it is using its proceeds for the IPO proceeds for some purpose, or is it just कि मैं private equity को exit दे रहा हूँ, so which is known as offer for sale. Whenever the IPO comes now, in the note, whichever note you study or the newspaper you study, they will write the purpose. They will be using, say for an example, Nike is coming with an IPO to raise money of say 100 crores, and probably they are giving exit to the venture capitalist. So वो वाले IPO में लगाना नहीं चाहिए पैसा. And same goes for the Paytm thing, वो भी offer for sale ही था. LIC भी offer for sale है, क्या हमें डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए? Ideally should not, but yeah, it's already too late to give a judgment on this. Then there is something known as IPOwatch.in. So this over here, you can go and check the gray market premium. So obviously gray market by the word itself, it's not legal, but most of the IPO investment happens based on this. You would have heard this on the TV channel or even on the newspapers, you have read it, कि GMP उसका इतना है, GMP has fallen, GMP has rising. So GMP, so you can track that on IPOwatch.in, wherein उनके gray market premiums daily basis पे publish होते हैं. So you can see what is happening. Over subscription कितना हुआ है वो देखना चाहिए. And mostly don't apply on the first day. वहाँ पे it's not like if you have applied first you will get it. And also we need to apply when we are sure we have some clarity about it. So no point applying first on the first day in the morning or the first day of the IPO open day. Apply on the second day after 6 p.m. Analyze all the 4-5 parameters which I've discussed above. So second or third day के बीच में आप कभी भी लगा सकते हो. And IPO has to be traded. So might as well just sell the shares at the opening day. 10 बजे लिस्ट होता है, 10:01 में आपको उसमें से एग्जिट होना है, चाहे उसमें 10 रुपए एंड 10% का प्रॉफिट बन रहा है या 20% का नुकसान हो रहा है, जस्ट एग्जिट. 95% of the time you will be always be in a profit when you do this. Why I'm saying you have to sell the shares of the IPO you have received, because just try to understand who has the most information about the company, and that too which was private till yesterday. The management, the promoter had the most knowledge. उनको सब पता है अंदर उनकी कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, नेक्स्ट क्वार्टर का सेल कैसे आने वाला है, कितने प्रॉफिट आने वाली है, कोई मेरी लाइबिलिटी आने वाली है क्या. And those guys are selling. So those are the most intelligent guy. बंदा जब सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा तो क्यों आपसे शेयर करेगा. जब प्रॉफिट नहीं होता है तो वो मेजरली दे ट्राई टू de-risk themselves so that people also benefit, people also share the loss. People also become the part of their losses. So somehow IPO को हमेशा ट्रेड करना चाहिए, उसमें कभी भी उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए. So might as well if people would have bought say Paytm and have sold on the first day itself, it was around 5 to 10% down, they would have lost just 10% of the investment. And probably the same Paytm you could have bought if you feel उसकी business अच्छा है, long term के लिए अच्छा रहेगा, पैसा बनेगा, you can still buy at almost 70-80% down from the IPO price now. And this Paytm is just an example which comes to the mind. There are n number of stocks in a similar category. Say for an example, let me get back to 2016 or 17. ICICI Prudential Life Insurance का IPO आया था. Very good company, everything is good. But जिस दिन उसमें list हुआ, उस दिन surgical strike हुआ था, and stock has fallen like 15-20% in a week's time. And from that level, it has given almost 3 to 4 times returns from that particular level. So अगर कंपनी अच्छी है ना तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनेगा उसका. बट अगर आपने आईपीओ में अगर आपने शेयर लिया हुआ है तो माइट एज वेल आप उसको 10:01 पे डे 1 पे निकल जाओ, जो प्रॉफिट बना ले लो, चाहे 10% 20% डबल या नुकसान, बट उसको रख के आप उसको लॉन्ग टर्म मत कीजिएगा. सो दैट्स हाउ आई विल दिस गोस. So my presentation ends over here. So people have asked a lot of questions to me. I've categorized them over there. I'm opening the forum over here. मैं अभी questions के answers करूंगा, साथ में अगर आपको उसमें कुछ पूछना रहेगा तो please पूछेगा. Just hold on. I'm opening it for everyone.
Okay, I've given access. Whoever wants to speak in between, they can unmute themselves and speak to. But एक time पे एक जन आए तो better होगा. Okay, so so people have asked me cash portfolio management करके एक I've created a topic for that where is there any automated way to find good stocks in the market at cheaper rates, holding period more than 10 years. So basically ये आप कर सकते हो automated way है. I mean to say you can use screener.in एक वेबसाइट है जो आप यूज कर सकते हो. वहाँ पे आप अपना स्क्रीनर बना सकते हो. चार्ट इंक करके एक स्क्रीनर है, वहाँ पे भी आप लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, मोमेंटम स्टॉक्स आइडेंटिफाई कर सकते हो. वहाँ पे स्कैनर्स पहले से बने हुए हैं. आपको सिर्फ जाके थोड़ा गूगल यानी विद इन दैट वेबसाइट यू हैव टू जस्ट सर्च द स्कैनर्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दे हैव सेड in terms of I'll just try to see if I can show you something. So ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को, फंडामेंटल स्कैन्स, ये आप यूज कर सकते हो. यहाँ पे काफी सारे मिड कैप स्टॉक्स स्कैन्स हैं और ये काफी फ्री है, यानी आप हमें तो एंड ऑफ द डे ही देखना है. सो you can Nitin, use sorry for the interruption. We cannot see the screen. Sorry, you cannot see the screen. Yeah, it's the same screen of Q&A. Okay, just hold on, now you can see charting. Yes. Okay, so let me go back to the start of this. So this is charting, charting.in. Okay, और उसमें आप you can just go to the screeners, we're already there. So there are something known as fundamental. In this particular thing, there is fundamental as well as technical charts. Both people who, based on their need, they can use this. So if we are talking about a fundamental thing, you can go into fundamental stocks scans and say low debt companies which you want to identify, stocks below book value or undervalued. But this just gives you, say for an example, इतनी सारी companies आ गई है इसमें. How many? There are 436 companies are there whose book value is less than, whose current price is less than its book value. मगर इसमें से हमें जो what we need to identify or make a filter out of it is, again we have to study the parameters which I have discussed in terms of promoter holding, B2C businesses, P क्या चल रहा है उसका, वो सारा चीज हमें करना पड़ेगा. So Zomato is over here. So Zomato's book value has fallen drastically. Current price is below its book value. मतलब 56 rupees 85 पैसे चल रहा है उसका प्राइस. तो शायद book value उसकी 57 या 56.85 से ज्यादा है. It says like that. So you can use this as a source. Screener.in है, वो भी एक अच्छी वेबसाइट है जो आप यूज कर सकते हो. So all both of this है ना, इसमें थोड़े पैसे देने पड़ते हैं बट काफी चीज फ्री मिल जाता है. So यहाँ पे भी काफी सारे पॉपुलर थिंग्स है which you can use it, like magic formula is one, that coffee can करके एक चीज है. So coffee can is one thing which you asked for 10 years, right? So these are the companies जो आपको सौरभ मुखर्जी की बुक है अनयूजुअल बिलियनर्स, उसमें उसके पूरे फॉर्मूलाज बताए हुए हैं उसने, हाउ ही हैज कंडक्टेड और डन दिस कॉफी कैन पोर्टफोलियो थिंग. यू कैन रीड दैट. पीडीएफ भी मार्केट में अवेलेबल है, बुक भी अवेलेबल है एंड उसके स्कैनर्स यहाँ पे अवेलेबल है. But before you use this companies, try to understand the book, what the author is about to say about how to handle each and every stocks, how to keep it for 10 years, what need to be done, what not need to be done. So वो एकदम डिटेल सब्जेक्ट है. तो आप 10 साल के लिए ये चीज कर सकते हो, कॉफी कैन चीज. So going back to so that is the automated way. आप वहां से यूज कर सकते हो और उसकी प्राइजेस काफी सस्ते हैं और 10 साल का होल्डिंग वैसे कर सकते हो. The other question is about portfolio allocation and appropriate risk management. So portfolio allocation is, if you have done the first part of our presentation in terms of अगर ये आपने इसको अधर किया है अच्छे से, so आपका मेजर
चीज ऑलरेडी एड्रेस हो चुका है इन टर्म्स ऑफ पोर्टफोलियो एलोकेशन, जहां पे आपके पास टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स भी है, फिक्स डिपॉजिट भी है, पीपीएफ भी है, गोल्ड भी है, और थोड़ा रियल एस्टेट है. सो यहाँ पे आपका मेजर चीज हो चुका है. बट एट द सेम टाइम द वंस द पोर्टफोलियो साइजेस इंक्रीजेस, तभी आपको ज्यादा अलोकेशन, यानी इन टर्म्स ऑफ अलोकेशन नहीं, आपको रिस्क ज्यादा मैनेज करना है, वहां चालू होएगा. Because risk manage is nothing but how you have placed your money in terms of large cap, mid cap, and small caps. Normally people try to average out the losers much, but actually उल्टा करना चाहिए. जो ज्यादा पैसा आपको बना के दे रहा है और उसके रिजल्ट्स एवरी क्वार्टर एंड क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अच्छे पब्लिश हो रहे हैं बाय द मैनेजमेंट, यू शुड एवरेज इट ओवर देयर रादर देन द अदर वे राउंड. से 100 रुपए का स्टॉक 50 हो गया, मैं और एवरेज करेगा, 20 रुपया और एवरेज करेगा, तो दैट इज नथिंग बट अ डिजास्टर. द मैनेजमेंट इज नॉट परफॉर्मिंग and you're still betting your money on that management who is not performing. So ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए. So risk management वहां पे आपका majorly address होता है. अगर आप जो मैंने filters आपको बताए हुए in terms of promoter holding and everything, that 4-5 filters, अगर वो basic चीज है तो भी आपकी investment safe रहेगी. Next question is asset allocation for a 40-year-old. Okay, so normally what happens, most of the RMs or the financial planners in the market will say, अरे आप 40 साल के हो तो आपका 60% डेट में जाना चाहिए, 60% इक्विटी में जाना चाहिए, 40% डेट में जाना चाहिए. Actually, I don't believe in that. It's my personal take on that, because what happens, I've seen people who are like 60-year-old but have a risk appetite of 40-year-old, and a 40-year-old who has not planned his life properly in terms of financial planning, अच्छे से नहीं किया, जो मैंने आपको आगे जब भी बताया ट्रायंगल प्रोटेक्शन प्रिजर्वेशन वाला, वो ठीक से नहीं किया, तो उनकी रिस्क एपेटाइट एट द एज ऑफ 40 इज मोर लाइक दे आर वेरी वनरेबल फॉर एनी बैंक्रप्सी और एनीथिंग व्हिच कम्स, से पैंडेमिक जैसा कुछ आ जाता है तो उनका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग और पूरा घर, खर्चे, इनकम सब उल्टा सीधा हो जाता है. बट if you have done or followed what I've told you in the earlier charts presentation, most of the things will be taken care. So asset allocation probably आप जैसे जैसे 40 पे पहुंचे और वो जो मैंने आपको बताया, अगर आपने वो फॉलो किया तो शायद 40 या 50 के आसपास आपकी रिस्क एपेटाइट बढ़ जाएगी rather than कम हो जाएगी. तो वो टाइम पे आप शायद ज्यादा बेट इन टर्म्स ऑफ ज्यादा riskier stocks लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, because you have created a cushion for yourself in terms of say you have created cushion for yourself in terms of having a lot of FDs, PPFF. सोचो आप 50 साल हो और आप आज 20-25 साल के हो, आपने 15 साल PPF इकट्ठा किया हुआ है 1.5 लाख डाल के. इट इज अ गुड अमाउंट. आई मीन टू से जब आप 50 साल के हो जाओगे, 45 हो जाओगे, तो ये पीपीएफ ही आपको अच्छा खासा क्वेश्चन, अच्छा सा, इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ रिलैक्स इन योर माइंड इन टर्म्स ऑफ ओके आई हैव सो मच मनी इन द बैंक, आई कैन टेक अ बिट ऑफ रिस्क इन माय, से प्रोबब्ली यस बैंक लेने को किसी ने बोल दिया थोड़े दिनों के लिए, it's a very riskier stock. Well, okay, I am 45, but as per the thumb rule in the market, people say, "Do you should not get into this." Probably you have a capacity to get into that, but provided you have followed all these things which I've mentioned over here. One, this is the one protection, and this is the other one too. So again, it's the stock market or financial planning. It's not a perfect science. Everything need to be checked before asset allocation decision is taken care of. Probably you're 40-year-old and आपके पास बहुत सारे responsibilities है घर में, probably your parents are not earning, और आपका wealth, you don't have so much wealth in your personal, कुछ भी नहीं आपके पास, और 40-year-old हो, आपकी सैलरी से 50,000 ही है, सो आप रिस्क एपेटाइट नहीं ले सकते. एट द अदर एंड आप 60-year-old हो या 20 साल के हो, और probably you are born in say Ambani's family and everything, so you don't need asset allocation in that case. Okay. Next goes for the technical analysis. The question is, which indicator is better, EMA or Tenkan-Sen and Kijun-Sen? Tenkan-Sen and Kijun-Sen is nothing but 9 EMA and 26 EMA, और ये भी EMA है. Tenkan-Sen and Kijun-Sen is nothing but a Japanese word है. एक इचिमोको करके एक टेक्निकल पैरामीटर है, उसका ये पार्ट है. इचिमोको इन अ होल यू कैन यूज इट,
or EMA you can use it. But again, don't get bogged down with all this technical. There are n number of technical analysis indicators in the market. आपको सिर्फ जो basic है ना वो important है. So जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, अगर आप इसको भी follow करोगे ना, आपका पैसा बन जाएगा. So nothing is right and nothing is wrong. You just have to identify one which suits you, and then accordingly you trade that particular thing. Risk management. How to mitigate risk in stock markets? How to determine my risk tolerance? Okay, nice question. And the next question is how to stay stable when market is down and not panic. So again, the whole principle of all this risk management, asset allocation comes down if you follow the principles which I've just laid out. Because अगर उसमें मैंने I have taken care of everything in terms of gold में कितना डालना चाहिए, म्यूचुअल फंड कितना रहना चाहिए, FD RD सेविंग PPF कितना रहना चाहिए, सब मैंने वहां पे बता दिया है. अगर जब वो सब हो चुका है, उसके बाद जो पैसा बचा हुआ है वही पैसा हमें मार्केट में लगाना चाहिए. और वो पैसा जो हम मार्केट में लगा रहे हैं उससे ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि वो 1 साल में मुझे इतना रिटर्न दे देगा, मैं फिर बाहर आ जाऊंगा. नहीं, वो पैसा आप ऐसा सोचो कि कम से कम 3 साल में अंदर रखूंगा, उसके बाद उसमें से रिटर्न बनेगा. तब जाके वो आपको आपके पोर्टफोलियो को थोड़ा हेल्प करेगा. एंड हाउ डू यू मिटिगेट द रिस्क? द सेम पॉइंट व्हिच आई हैव टोल्ड यू. डिटरमाइन माय रिस्क टॉलरेंस. अच्छा, अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव. Again, the way I've told you asset allocation for 40-year-old, to determine a risk tolerance, a 40-year-old guy can have a risk appetite, won't, यानी वो उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत कम होगी, और एट द सेम टाइम जो 60-year-old है उसकी रिस्क लेने की कैपेसिटी ज्यादा है. So again, how do I check my risk tolerance? मेरा एकदम सिंपल पैरामीटर है, रात को नींद आती है क्या अच्छे से. बिकॉज इफ दैट इज इम्पोर्टेंट, और वहाँ और आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी ऊपर नीचे जो स्टॉक मार्केट जा रहा है उसमें से आपको अनइजीनेस हो रहा है क्या, या आपको बहुत डर लग रहा है, आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको चिड़चिड़ा हो रहा है. सो ऑल दिस आर द वेरी बेसिक थिंग व्हिच वन नीड टू आइडेंटिफाई इररिस्पेक्टिव योर बैंक अकाउंट, इररिस्पेक्टिव हाउ मच यू हैव इन्वेस्टेड. से आप बोलोगे अरे मेरे पास तो 50 लाख पड़ा हुआ है, मैंने सिर्फ 50,000 रुपए ये स्टॉक में डाला हुआ है, वो 50% डाउन है. बट वो 50% मतलब 25,000 रुपए आपका डाउन है, मगर उसके लिए जो आप स्ट्रेस विच यू आर टेकिंग इज वेरी हाई. So you don't have a risk. So just don't get into that. So that's how it is. It is very subjective. Again, it does not determined by the age or the amount you have in your bank account. It does not determine. There is no simple formula for that. The whole formula is कि मुझे अपने आप को समझना है. And that is how. So whenever I meet someone, I speak to him almost 1 or 2 hours just to understand his appetite in terms of how he would behave in a different situations. And same goes for how to stay stable. Both I have clubbed together. Option trading. So normally option trading तो नहीं करना चाहिए, खास करके जब हम अभी जब मार्केट में नए आए हुए हैं. और ऑप्शन ट्रेडिंग कब करना चाहिए? जब ट्रायंगल का जो मैंने बताया था ना, ये ट्रायंगल के टॉप पे आप जब पहुंच जाओगे ना, या ये दोनों के बीच में, तब. इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तब आप ट्रायंगल के बाहर जा सकते हो, यानी स्प्लर्ज, निर्वाणा, फाइनेंशियल फ्रीडम. जब यहाँ पे आओगे ना, तब जाके ऑप्शन ट्रेडिंग सोचना चाहिए. अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग का एसेंशियल्स थिंग्स क्या है? सबसे पहले आपको उसमें लिक्विड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना है. सो लिक्विड स्टॉक्स क्या होते हैं? वो जहाँ पे बाइंग और सेलिंग के बीच का प्राइस बहुत कम होता है, डिफरेंस कम होता है. आपको लास्ट 10 दिन यानी 2 हफ्ते. सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज अ 30 days, नॉर्मली 20-25 दिन का एक्सपायरी होती है. तो लास्ट के 10 दिन में आपको स्टॉक्स खरीद के रखना नहीं चाहिए. ऑप्शंस हमें एवरेज नहीं करना चाहिए. लॉन्ग ऑप्शन जो हम बात कर रहे हैं ना, हमें नहीं करना चाहिए. हमने स्टॉक अगर ऑप्शन बाय किया हुआ है, आप बोलोगे अरे ये तो 50 रुपए में बाय किया था, 20 रुपए हो गया, चलो एवरेज करते हैं. नहीं, ये स्टॉक नहीं है सर, ये आपको जीरो करा देगा. लोगों को लगेगा कि अरे ये तो ऊपर जाएगा, जाता है ऊपर, बट आपको उसके पहले सारी स्टॉक्स एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, वो मोमेंटम, वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन में ही आना चाहिए. अगर वो नहीं आ रहा है और आप सिर्फ एवरेज करोगे तो आप सिर्फ जीरो ही हो जाओगे, उसमें कोई पैसा नहीं बनने वाला है. सो आई वुड से कि अवॉइड दिस. अगर आपको कोई ट्रेडिंग ही करना है ना, तो आप स्टॉक ले लो. से फॉर एन एग्जांपल रिलायंस, अगर आपको लग रहा है बढ़ने वाला है तो रिलायंस का स्टॉक ले लो. आप बोल रहे हो 10 दिन में बढ़ेगा, 10 दिन में अगर बढ़ गया तो अच्छी बात है, आप उसको पर्टिकुलर से 5% 10% मूवमेंट में पैसा
लेके निकल जाओ। जब आप ये चीज करोगे 4-5 महीना 6 महीना, तब आपको धीरे धीरे समझेगा कि ओके माय मोमेंटम स्ट्रेटेजीज आर वर्किंग एंड आई विल गेट इनटू, देन यू कैन गेट इनटू द फ्यूचर्स। ऑप्शंस में नहीं, फ्यूचर्स करो। और फिर फ्यूचर्स में भी अगर आपको 6-7 महीना अच्छा सक्सेस मिल रहा है तो आप ऑप्शंस का सोच सकते हो। Future outlook, short, medium to long term. Majorly, short term is bearish right now. See, long term में पूरी दुनिया में we are left with only India as a country which is quite sustainable in terms of inherent demand. जो इंडिया की खुद की डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इंडिया की खुद की जो डिमांड है, उसके लिए इंडिया काफी सक्षम है। सो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स, वॉर हो रहा है, चाइना में कोविड आ रहा है, एफआईएस पैसे लेके जा रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, so this happens every time, but that's what, but this is a good time to buy stocks for all the large cap stocks which we discussed earlier. The way we have discussed, you can start using that filter and do it. And what instrument strategies you execute and how much capital required and estimated returns. Again, so this is specifically to me. I deal in everything, whatever we have discussed. There are short-term strategies which I use for stocks. There are 1-year strategies which I use. There are 10-year strategies I have used. जैसे कि मैंने आपको कॉफी कैन जो बताया था सौरभ मुखरेजा का, वो मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। मैजिक फॉर्मूला एक है जो एवरी ईयर वाला फॉर्मूला है, एवरी ईयर वाली स्ट्रेटेजी है, वो भी मैं करता हूँ। कैपिटल रिक्वायर्ड सच ऐसा कुछ होता नहीं है इसमें, बिकॉज कैपिटल, इफ यू आस्क मी, आई मैनेज even 5 lakhs वाला client and I have around crore वाले भी clients है. So and estimated returns, this is not an FD. So यहाँ पे returns बताना काफी difficult है. Returns market देता है, हम सिर्फ process follow करते हैं. So now I open up the forum for Q&A. Anyone, anything specifically want to ask? Okay. Ashutosh, you want me to explain valuations? Okay. आशुतोष, सो वैल्यूएशंस में क्या होता है कि वैल्यूएशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका पहला आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया हुआ है ना, वो कौन से बेसिस पे सिलेक्ट किया हुआ है। अगर कंपनी अच्छी है और शॉर्ट टर्म ऐसे डीमार्ट अभी जो यानी 5100 उसने हाई मारा था, 5100 से अभी कुछ 3500 पे आ गया हुआ है। सो इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कंपनी में कोई बड़ा चेंजेस आया है कि नहीं आया है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सो द होल कम्स बॉइल्स डाउन टू द कंपनी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। अगर वो अच्छे से कर रही है काम, और अभी बिकॉज एफआईआईज या मार्केट में ओवरऑल सेलिंग आ रही है इसलिए वो नीचे आया हुआ है, सो इट इज अ गुड टाइम टू बाय। अगेन वैल्यूएशंस आप पीई चार्ट देख सकते हो, बट पीई चार्ट कैसे देखना है, वो इंडिविजुअल कंपनी का लास्ट 5 साल का पीई चार्ट देख लो, आपको screener.in में दिख जाएगा। तो उसमें आप देखो वो कौन से रेंज में आ गया हुआ है, क्या वो अपने एवरेज से नीचे आ गया है क्या। सो वो आपको काफी एक जजमेंट लेने के लिए हेल्प करेगा। Like Hitendra, I'm sorry, see, like for example, segment wise देखो तो currently there is a lot of talk कि IT sector as such is overvalued and there is a lot of correction happening yeah. So as a retail investor, if I have to determine what would be that approximate level to enter into a particular stock or where I could invest, so how can we do that? I mean, say a TCS or Infosys. Okay, can you see my chart now? Chart दिख रहा है आपको TCS something? नहीं ना, एक मिनट। So ये अभी दिख रहा है? Yeah. Okay. So this is a TCS chart. Okay. So what happens normally? TCS का फंडामेंटल एनालिसिस करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। TCS का आपको शेयर होल्डिंग भी आपको दिखेगा कि प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा नहीं है। ओके, बट इंस्टीट्यूशन होल्डिंग इसमें सबसे ज्यादा है। सो लार्ज कैप्स में इंस्टीट्यूशन होल्डिंग कम, प्रमोटर होल्डिंग कम होती है और इंस्टीट्यूशन होल्डिंग ज्यादा होती है। बट अगर आप इसको देखोगे TCS को, अगर आप ये वाला जो मेरा स्क्रीनर जो मैंने लगाया हुआ है, पी वैल्यूएशन इसमें जाने दो। लार्ज कैप्स में नॉर्मली टेक्निकल ज्यादा चलता है कंपेयर टू पी। ओके, सो अगर आप इसमें देखोगे कि ये कहां से
so whenever it is in green, तो आप यहाँ पे बेचना चालू कर सकते हो. आई मीन उससे ऊपर जा रहा है तो आप रुक सकते हो कहां तक ऊपर जा रहा है. और एक ऐसा लाइन बिन आप हॉरिजॉन्टल. सो व्हाट यू कैन आल्सो डू इज लाइक दिस. यू कैन सी द चार्ट ओवर हियर वेयर इट्स लाइक इट इज. सो ये मैंने जो मैंने आपको 89 EA में बताया हुआ है. सो इट इज गुड टाइम टू बाय ओवर देयर. अगर आप इसको छोटा छोटा करोगे ना, आप हमेशा देखोगे कि वो ये कोविड के टाइम पे था दिस पीरियड, इसलिए वो 200 डे मूविंग एवरेज पे आ गया. दिस ब्लैक लाइन इज 200 डे मूविंग एवरेज एंड दिस इज द बैंड. सो व्हेनेवर इट गोज अबव द बैंड ना, आप उसको ले सकते हो. देखो अगर आपने यहाँ पे लिया होता तो ये चल रहा है सीधा सीधा. ओके ओके. सिमिलरली सो ये कोविड नहीं, कभी भी आप ऐसा देखोगे ना. सो अभी हम लोग पहुंच गए, दिस इज 2012 13 14. आप देखो it works like magic for the large cap stocks. So you just have to focus on this. Whenever it approaches this, say this place, पहला वाला EMA line 89 high low. So जैसे ही वो जिस दिन ग्रीन होगा ना, ये वीकली है, जो वीकली है, और आपको वीक के यानी फ्राइडे या सैटरडे आप देख लो कैसा ही है, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हो. सो मंडे को आके आप यहाँ पे बिड डाल दो और आप खड़े रहो. समझे. सो स्टॉप लॉस कैसा हो सकता है कि अगर वो पर्पल लाइन के नहीं, अभी लॉन्ग टर्म स्टॉक हो गया ये, बराबर है, बिकॉज यू विल बी बाइंग इट फॉर लॉन्ग टर्म, एटलीस्ट 5-6 महीना रखोगे TCS. सो अगर उसमें कभी वो पर्पल लाइन के नीचे आ रहा है तो आप उधर थोड़े अलर्ट हो जाना चाहिए कि अरे ये क्या हो रहा है इसमें, थोड़ा और फिर उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा. बट मोस्टली इट डज नॉट हैपन. सेम गोस फॉर इन्फोसिस. सो अगर आप TCS का अभी का राय मेरा पूछोगे, सो इट हैज कम टू ए गुड वैल्यूएशन. प्लस उसका जो अभी बायबैक था कुछ मेरे ख्याल से 4000 के आसपास था, 4800. तो मैनेजमेंट ने अगर 4800 में बाय किया हुआ है, मतलब कुछ तो बात है. So probably what will happen eventually, the buyback price will be reached, but it will take some time. We don't know how much time it will be there, but to buy you can wait for the next green. अगर यहाँ पे green आ गया ना, तो उसके next week में आपको buy कर सकते हो. लेके होल्ड करो. अभी इसको buy मत करो because इसका डायरेक्शन जो है ना नीचे वाला है. राइट. सो अभी इसको बाय यानी वो फॉलिंग नाइफ हो जाएगा. सो उसको रुको. ये देखो, एंड दिस इज अ क्वालिटी कंपनी. इसमें कोई आपको ऐसा बड़ा झटका नहीं लगेगा कि मैनेजमेंट पूरा पैसा लेके भाग गया, ऐसा नहीं होने वाला है. सो यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द नेक्स्ट ग्रीन कैंडल, से प्रोबेबली समथिंग लाइक दिस. सो ये तो ऊपर जा रहा था, तो नीचे वाला कौन सा था. सो दिस हैपेंड, ये गिर रहा है, देन दिस हैपेंड एंड देन दिस. प्रोबेबली यहाँ पे आपने खरीदा होगा, बट ठीक है, आपको ज्यादा यानी ये वाला पहला ग्रीन आ गया था, बट ठीक है, you can wait for it and then you rally चालू होती है बाद में वापस. Similarly over here. So valuations for the large cap की जगह पे आप ये देखोगे ना, large caps के लिए काफी easy हो जाएगा. Okay, anyone else? Srinath, ideal minimum period to hold mutual funds. Mutual fund अगर आप SIP कर रहे हो, so hold it for at least 5 years to see the good returns. Normally क्या होता है म्यूचुअल फंड में SIP आप कर रहे हो ना, so हर एक इन्वेस्टमेंट को 12 महीना से ऊपर होने के लिए 24 मंथ लगेगा. You getting it? So जो सपोज आपने पहला महीना डाला इन्वेस्टमेंट, उसको 1 साल होएगा 12th मंथ में, बट जो 12वें महीने में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया उसको 1 साल होएगा 24th मंथ में. मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट विच हैव इन्वेस्टेड सिंस से लास्ट 2 years, everyone would have an age of more than 1 year after the 24th month. So mostly आप 5 साल रुकना चाहिए म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स देखने के लिए. Hope this helps. Any other questions? Anyone? Hi, Hitendra Kripali. I'm audible. Yeah, you're audible. So just would like if you can share more thoughts on sector mutual funds, which you have said to avoid. Whereas in comparison on sector stocks, you have said you can go for that. So how these two things are different? So sector mutual fund is nothing but everything you have put in one single stock sector. Okay. Right. So in that case, what will happen कि suppose मैं 2000 का example देता हूँ. 99-2000 में IT bubble था. IT bubble बाद में पता लगा, but IT boom था. तो IT boom में सबने क्या किया, काफी लोगों ने म्यूचुअल फंड लेके आए फॉर IT सेक्टर कि सब इसमें डालो, और सब लोग एवरीवन वे पुटिंग द मनी इनटू द IT सेक्टर. ये तो अभी नेक्स्ट जनरेशन यही है, एवरीथिंग इज वेल फाइन. सो it was a good thing, but what happened after that, IT bubble got busted. ठीक है,
और उसके बाद जो हाई 2000 में था ना, वो हाई को आने के लिए उसको कम से कम 8 साल लगा. सो आई जस्ट शो यू, लेट्स गो टू द मंथली चार्ट. Okay. Can you see this? Are you able to see the charts? Yeah. Yeah. So this was 1st March 2000. इसका प्राइस, दिस इज इन्फोसिस. ओके, इन्फोसिस बेस्ट स्टॉक, सब कुछ अच्छा. ओके, यहाँ पे 217 रुपया का ये स्टॉक गया था, यानी एडजस्टेड टू ऑल द स्प्लिट एंड बोनसेस एंड एवरीथिंग, 217 का प्राइस था हाई. ठीक है, ये प्राइस को वापस क्रॉस करने के लिए, दिस वाज मार्च 2000, कब क्रॉस किया उसने? 2006. 6 साल स्टॉक कोई परफॉर्मेंस नहीं दिया. एंड इफ यू सी, एक्चुअली आपको मैं बोल रहा हूँ, यू कैन नॉट सी एक्चुअली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द म्यूचुअल फंड्स दोस हु वे आईटी सेक्टर फंड, वो लोग इधर मर्ज हो जाते हैं, और या तो कंप्लीटली उसका डिस्क्लोजर या नाम चेंज करके हमें वो दिखता नहीं है. तो हमें जो दिख रहा है ना, जो भी सेक्टर फंड या जो भी हम मनी कंट्रोल या वैल्यू रिसर्च के वेबसाइट पे जाके देखते हैं, तो वहां पे हमें जो दिखता है वो नहीं, तो दोज हु हैव सर्वाइव्ड. बट अदरवाइज ये वाला जो फंड है, काफी सारे आईटी से 10 रुपए का एनएवी पे आते हैं उन लोग. ठीक है, होल्डिंग जब वो लोग एनएफओ लेके आते हैं, तो 10 रुपए वाला चीज हो गया था 3 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया. So having that kind of exposure does not work. Might as well if you go for a diversified mutual fund, उसके अंदर आईटी भी होता है, फाइनेंशियल सेक्टर भी होता है, रिलायंस यानी एनर्जीज भी होती है, अदर फार्मास, और वो सारे सेक्टर्स होते हैं जो पूरे निफ्टी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या सेंसेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाले होते हैं. तो सेंसेक्स इतना गिरा नहीं है, सेंसेक्स 6 साल में, या निफ्टी ये साल से ये साल तक इतना, इससे ज्यादा बढ़ा हुआ है. You're getting the point. So आप जो रिस्क ले रहे हो ना, in putting your money in one single sector, वो रिस्क ऐसा हो सकता है 6 साल तक. और कौन रुकने वाला है 6 साल तक यहाँ पे, बताओ? 6 साल में आपका पैसा बना ही नहीं, एफडी में ज्यादा बन गया होता अगर सपोज इन्फोसिस में, या इन्फोसिस या आईटी. ये तो मैं इन्फोसिस बता रहा हूँ, जो एक was a leader that time also and today also, but there were many other companies which were completely zero. केपी के जो स्टॉक्स है, केतन पारेख के स्टॉक्स है, वो सारे जीरो हो गए हैं. तो वो भी उस आईटी सेक्टर के फंड में थे वो टाइम पे. यू गेटिंग इट? सो जो आप रिस्क ले रहे हो ना, जो रिटर्न कमाने के लिए, वो इट इज नॉट कॉम्पनसेटेड बाय द रिटर्न्स व्हिच अ सेक्टर फंड विल गिव. और जो मैं बोल रहा हूँ कि आप जो फंडामेंटल में मैंने आपको बताया था स्टॉक सिलेक्शन में, सेक्टर लीडर लेने को बोला मैंने. यू कैन हैव 5 or 6 डिफरेंट सेक्टर्स. से आपको आईटी में अच्छा लग रहा है, इन्फोसिस ले लिया, फार्मा में आप बोल रहे हो सन फार्मा ले लिया, रिलायंस, टेलीफोन में जियो के बदले रिलायंस ले लिया. सो यू कैन हैव दो सेक्टर लीडर. आई एम नॉट टेकिंग प्रूवन सेक्टर्स लेने को बोल रहा हूँ, जो B2C कंपनीज, B2C सेक्टर्स में, और उसमें भी सेक्टर लीडर लो. उसमें भी 3rd, 4th, 5th रैंक वाले को मत लो आप आपके पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म रखने के लिए. सो दैट वाज व्हाट आई मेंट. होप दिस हेल्प्स. Yeah, thanks. Okay. Vivek asked, can you suggest 4-5 good stocks to begin with for fresh investors? How good EV market? 2 stocks from EV perspective point of view. So again, 4-5 जो देखिए, जो मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया कि आप एक ये, can you see this screen? Let me show screen. Okay, so can you see this? So मैंने यहाँ पे आपको जो 4-5 आप जो स्टॉक्स पूछ रहे हो ना, उसके लिए मैंने आपको यही बोला कि आप आइडेंटिफाई कर लो. से HDFC से आपको HDFC बैंक ले लो, या टाटा में से टाटा कंज्यूमर है, टाटा स्टील है, ये आप ले लो. सो ये वाले स्टॉक्स में आप, या ICICI बैंक ले लो, HDFC बैंक ले लो. दिस ऑल आर एवरग्रीन स्टॉक्स. आप सी, हम एकदम छोटे इन्वेस्टर्स है मार्केट में, हमें नहीं पता कौन सा चीज चलने वाला है, नहीं चलने वाला है. सो इट्स EV मार्केट भी जो अभी भी जो चल रहा है मार्केट में, सी मार्केट हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है, और पीपल ट्राई टू एनकैश दैट टुडे इटसेल्फ. बट EV जो स्टोरी है, ये ऑलरेडी बिल्ड इन हो चुका है. अभी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, प्रोबेबली अच्छा रिटर्न नहीं बनेगा. से फॉर एन एग्जांपल, थोड़े साल पहले से ही शुगर स्टॉक्स भाग रहे थे, बट काफी लोगों ने उसको देखा नहीं. तभी एथनॉल का पॉलिसीज पहले ही आ गई थी, बट एकदम नेसेंट स्टेज पे थी. तभी लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया, और आज सारे स्टॉक्स से बलरामपुर चीनी, धामपुर चीनी, देयर आर मेनी अदर्स स्मॉल
शुगर स्टॉक्स विच हैव risen by like 4-5 times बढ़ चुके हैं. फिर वहाँ पे एक गुलशन पॉली करके एक स्मॉल कैप था, वो 10-15 गुना बढ़ चुका हुआ है. बट ये 3-4 साल पहले की स्टोरी थी. आज आप उसमें इन्वेस्ट करने जाओगे तो हमें तकलीफ हो सकती है. सो हैज अ रिटेल इन्वेस्टर द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज, आप अगर ये फॉलो करोगे स्टॉक एसआईपीज इन अ प्रूवन कंपनीज, प्रूवन सेक्टर्स, तो आपका पैसा बनना बहुत इजी हो जाएगा. तो हमें क्या चाहिए, नॉर्मली मार्केट में लोग बोलते हैं अरे मुझे मल्टी बैगर चाहिए. बट मल्टी बैगर की जगह पे, मल्टी बैगर 100 में से 2 एक कंपनी बनती है. बट अगर आप प्रूवन कंपनीज से एचडीएफसी ग्रुप, टाटा ग्रुप और कोई भी आपको जो बड़े बैंक्स है उसमें अगर अपने पैसे लगाए होते, कंसिस्टेंटली आपको 12 से 15% ऑन एन एवरेज पर एनम रिटर्न्स बनता, and which is quite good. Warren Buffett is famous and he has become famous only by making 15% return CAGR for 50 years. So अगर आप भी 15% अगर कमा रहे हो तो आप भी उसमें से कहलाओगे. But the thing is you have to consistently do that. No point running after multi-baggers. Multi-baggers नहीं बनते इतनी आसानी से, और खास करके हम रिटेल इन्वेस्टर्स को लास्ट में मिलता है, क्योंकि इधर हम कोई व्हाट्सएप या कोई यूट्यूब पे पढ़ के या कोई पेपर में पढ़ के इन्वेस्ट करते हैं. वैसा मल्टी बैगर मिलना बहुत मुश्किल है, हमारा पैसा वहां पे नुकसान ही होता है. सो जस्ट ट्राई अवॉइड दैट, फोकस ऑन द थिंग्स विच हैज बीन प्रूवन, उसी में काम करो. 12 यानी आपकी एफडी रेट 6-7% है, एंड यू विल बी आराम से मेकिंग 15% CAGR और 12 to 15% CAGR on एनी ऑफ दिस. अभी अच्छा मल्टी बैगर का जब डिस्कशन आ रहा है, थोड़े टाइम पहले टाटा मोटर्स 100 रुपए का स्टॉक था, आज 500 रुपए का स्टॉक है. तो अगर टाटा मोटर्स जैसा कंपनी है, या रिलायंस पैंडेमिक के पहले 400 रुपए का स्टॉक था, आज 2000-2500 रुपए का स्टॉक हो चुका है. सो अगर इतनी बड़ी कंपनी 4-2 times हो सकती है इन अ शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, माइट एज वेल आप उसी में इन्वेस्ट करो ना, शायद आगे चल के वो और बड़ा हो जाए. सो रिलायंस का मार्केट कैप था 6 लाख करोड़, पहले 2 लाख करोड़ था, पैंडेमिक में 6 लाख करोड़ हो गया और आज 19 लाख करोड़ पे. यू गेटिंग इट? जो बड़ा है वही बड़ा होने वाला है. और रिलायंस में इतना आपको कोई बोलता है ना प्रोमोटर पैसा लेके भाग गया, स्टॉक जीरो हो गया, कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. बट द थिंग इज, हम ह्यूमन नेचर का क्या प्रॉब्लम है, हमें कुछ नोवेल्टी चाहिए, कुछ ऐसा अलग चाहिए. बट जो कंसिस्टेंटली लोग पैसा जो बना के दे रहे हैं ना, वहां पे हम जाते नहीं है. सो वो एक दिक्कत आ जाती है. बट दैट्स व्हाट सेइंग विवेक, focus on the companies, the quality companies, the big companies of India. Do stock SIPs in that. आराम से पैसा बनेगा. Okay, thanks. Yeah. So just one question on Yeah, Tata Motors, since you opened the topic. Yeah. My direct question is the Tata Motors good stock to buy for the next 5-6 years at least? Yeah, you can buy it, but again, do the SIPs in that. It's because अभी जो मार्केट में जो चल रहा है ना, अभी क्या हो रहा है कि EV में टाटा मोटर्स के गाड़ियां आ गई है मार्केट में, अच्छी चल भी रही है, यानी he has taken whatever, because वो उसका जो भी टाइप है JLR की वजह से, फॉरेन के नो हाउ की वजह से उसने काफी फास्ट कर दिया. बट मारुति could not capture that. So thing is, you can also have Maruti in your portfolio. So देखो क्या होएगा, मारुति और टाटा मोटर्स अगर आपने दोनों लिया, टाटा मोटर ईवी में अगर आगे बढ़ते जा रहा है, उसको फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिल ही गया हुआ है, ठीक है, वो बढ़ते जाएगा तो वो स्टॉक है आपके पास. अगर मारुति आता है, मारुति का जो मार्केट शेयर है ऑलरेडी 50%, और मारुति जब भी आएगा मार्केट में, वो सस्ते से सस्ता लाने की कोशिश करेगा, बिकॉज उसका ट्रेडमार्क ही वही है कि मैं एकदम सस्ता लाऊंगा, एकदम अच्छा लाऊंगा, इंडियन पॉकेट्स के फेवरेबल में लाऊंगा. And if he brings that kind of a product in the market, then Tata Motors will come down, because people will go back to Maruti. You're getting it? So might as well, to play EV, you can have both of these stocks. SIP चालू कर दो इसमें. Okay, thank you. Okay. Ashutosh, what are the segments for future which are in a nascent stage right now but will be prominent sector in future? So again, इसमें भी जो स्मॉलर सेगमेंट्स जो ये हो रहे हैं ना, अभी जैसे इंडिया में काफी सारे मैं मेजरली B2C ज्यादा देखता हूँ कंपेयर टू B2B. B2C में मुझे काफी लग रहा है कि जो राइज वाली कंपनीज है, अगेन द मैनेजमेंट क्वालिटी इज क्वाइट डाइसी ओवर देयर, बट राइज वाली कंपनी है, FMCG कंपनीज है, FMCG कंपनीज को जो so there are something known as aroma.
हर एक जो हम कंज्यूम कर रहे हैं एफएमसीजी प्रोडक्ट, हर एक का एरोमा अलग होता है। वो एरोमा जो बनाती कंपनी है वो एक है जो आप देख सकते हो, बिकॉज द न्यू मोर इनोवेशंस और द मोर एफएमसीजी कंपनीज आर कमिंग टू द पिक्चर। आप एक्चुअल ले लोगे कि अरे ये तो बेचता है, बराबर है वो बेचता है, यानी दिस इज थोड़ा रिसर्च करने वाला टॉपिक है, बट आप इसको डायरेक्टली नहीं ले सकते। बट या दोज आर द कंपनीज। सो एसएच केलकर करके एक कंपनी है, ओरिएंटल एरोमेटिक्स लिमिटेड करके कंपनी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फूड्स एंड इन करके एक कंपनी है, कुसुम मसाला बेचते हैं लोग। सो ऑल आर दिस अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। This is not recommendations, this is things which I am studying right now. This would be the next segment where people, because हम self sufficient हो जाएंगे इसी के अंदर, यानी in terms of food and everything. Hello. Hello. Yeah, just I'm basically any thoughts on segments like say segments like mobility solutions, if we are talking about automation, or segments like robotics, or segments like any fields where artificial intelligence, or I mean those kind of segments which will definitely come up big time. And or something like clean energy, because I mean beyond this battery solutions, we like hydrogen based, I mean any good segments which you think that any thoughts about this kind of segments which Yeah, all these segments are good in terms of AI में अभी तक कोई आया नहीं है listed, so we cannot talk much about it as of now. But yeah, this is a good space to invest in. But as of now, see what is important in the end of the day. See वही अभी मैं एक एनालॉजी आपको देता हूँ. People were talking about कि Paytm आ जाएगा तो वो HDFC को replace कर देगा. That has not happened, and it will not happen. And same goes today morning only I was seeing this chart where people were talking about Bitcoin आ जाएगा तो सारे banks बंद हो जाएंगे. But what has happened? Something reversed. It is a debatable topic. It is not still developed. But even if Bitcoin, अभी Bitcoin के example ले लेते हैं. Bitcoin is the next future. Everyone knows that. Metaverse भी आ जाएगा. Everyone knows that. But Bitcoin has fallen. अगर आपने उसमें पैसा डाला होता से 40,000 पे, 35,000 पे, आज 29,000 हो गया. क्या हम रुकते? क्या हमारी टेम्परामेंट अच्छी है उतनी रुकने की? क्या हम इतने गंगो है? और our research is so strong that we'll wait even if it goes to 8,000 again. We don't know. We are not. And when we see red in our portfolio, whatever might be the चाहे म्यूचुअल फंड हो, चाहे स्टॉक्स हो या क्रिप्टो, आप नहीं रुक सकते. आप कितना भी बड़ा फ्यूचर हो, unless until we have deep pockets. So चार्ली मंगर, वॉरेन बुफे बोलते हैं कि हम लोग को चलता है 50% हमारा पोर्टफोलियो नीचे आता है, हमें चलता है, बट हमें नहीं चलेगा. एंड वी आर नॉट ऑफ दैट टेम्परामेंट. और वो तो रिसर्च करके वैसे बैठते हैं और फिर भी उनका 50% डाउन आता है. You're getting it. So all these are good investments, but thing is we need to invest only the जब numbers convert होते हैं. Paytm बोलता है अच्छा everyone is using Paytm, but Paytm क्या profit कर रहा है? नहीं कर रहा है. So उसका you can see that Paytm will replace. So there was a story almost 10-15 years back कि IDFC will become the next HDFC. So people बोलते हैं अरे उसमें भी DFC, इसमें भी DFC है तो ये HDFC हो जाएगा. But लोगों के पास IDFC कब से पड़ा हुआ है स्टॉक, और स्टॉक वहीं पे पड़ा हुआ है. पहले उन्होंने डीमर्ज किया, अब वापस मर्ज कर रहे हैं. सो देयर इज नथिंग व्हिच इज हैपनिंग. सेम गोस फॉर यस बैंक. यस बैंक में गिर गया, अरे और कितना गिरेगा, लेते 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 वहीं पे पड़ा हुआ है. सो वन व्हिच इज एचडीएफसी बैंक, इररिस्पेक्टिव व्हाटएवर हैज हैपेंड. आईसीआईसीआई बैंक में भी वो चंदा कोचर का जो व्हाटएवर दैट इशू हैज हैपेंड, स्टॉक हैज फॉलन बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड इश्यूज एंड एवरीथिंग. अगेन स्टॉक वहीं पे पहुंच गया हुआ है ना, उनके ब्रांचेस में फर्क पड़ा हुआ है ना कुछ हुआ है. बट so the new things which are coming, definitely we should keep a study open, we keep on reading on it. That's good. But उसमें इन्वेस्ट करने के लिए ना आराम से करना चाहिए, एकदम फुर्सत में. आई मीन टू से वी कैन बेट इट वेरी स्मॉल. अभी नजारा टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी जो गेमिंग में, तो हमारे सारे बच्चे जो पूरा दिन, या हम भी आजकल गेम्स खेलते हैं, हर एक बंदे के पास मोबाइल है, सब लोग गेम कर रहे हैं. सो नजारा टेक्नोलॉजीज ई स्पोर्ट्स करके एक चीज है जो बेसिकली नाउ विल बी पार्ट ऑफ ओलंपिक्स. सो नजारा टेक्नोलॉजीज इज वन ऑफ द गुड कंपनीज. बट उसके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, ओवरऑल इट्स ऑन पार. जितना उसका वैल्यूएशन पे जो चल रहा है ना उसके पार पे. बट ये आगे और चलेगा क्या, तो उसके रिजल्ट्स
को ट्रैक कंटिन्यूसली करना चाहिए, और जैसे जैसे वो डेवलप होगा यानी वो प्रॉफिट दिखाना चालू करेगा, तो ऐसे ऐसे हम अपना स्टेक इन नजारा टेक्नोलॉजीज बढ़ाएंगे. सो आई एम होल्डिंग नजारा टेक्नोलॉजीज बिकॉज उसके काफी सारे यानी द वे इट इज वर्क एंड एवरीथिंग, उसके जो बिजनेस मॉडल्स है मुझे अच्छे लगे, मैनेजमेंट अच्छा लगा एंड एवरीथिंग. बट ये फ्यूचर है. सोचो जियो जैसा, जियो गेम्स है, पेटीएम गेम्स है, जियो इसको एक दिन में खरीद सकता है, बट ही हैज नॉट बॉट इट. सो देयर इज सम वैल्यू व्हिच नजारा हैज, सो दैट्स व्हाई इट इज ट्रेडिंग at such a good price and still survive in the market. So जो आप बोल रहे हो ना, AI technologies and everything, it will come definitely, but we need to identify those who will survive, because हमारा कैपिटल तो लिमिटेड है ना, हम सब जगह तो लगा नहीं सकते. हमें तो उतना ही देखना है कि ठीक है हम थोड़ा लेट एंट्री करेंगे. जैसे इवन फॉर क्रिप्टो पीपल वर आस्किंग मी मेनी टाइम्स सिंस 2013-14 आई वाज स्टिल नॉट श्योर अबाउट इट. वो ऊपर गया, पीपल से अरे तूने मिस कर दिया. मैंने इट्स ओके, आई मिस्ड इट, नो प्रॉब्लम. जिस दिन समझेगा ना, अगर वो $1,00,000 पे भी मुझे खरीदना पड़ेगा ना, और तभी वैल्यू. Which have fallen 97% now. सॉरी. There are some cryptocurrencies which have fallen 97%. Exactly. So the point is, if there is a value in anything, even if you buy at a expensive price, say आज 30,000 पे चल रहा है, आपको पता लगा कि आपकी स्टडी के हिसाब से पता लगा कि ओके 1,00,000 रुपया डॉलर पे पहुंचा, तभी आपको लगा कि हाँ इसमें वैल्यू है, तभी 1,00,000 पे खरीदो. बट बाय ओनली व्हेन यू आर श्योर अबाउट इट, बाय ओनली व्हेन you have done a considerable research on it. Don't just buy because everyone on the street or everyone on your circle is buying. Okay. Thanks. Yeah. So Shaunak asked, my question as an investor is divided into parts. First, say if you have 100 for investment, what suggestion would you do to allocate percentage wise over different pool of investments? Okay, Ronak, the first part, I think more or less we have covered this, and the second part is how much return is the range of CAGR basis we can expect from the pool debt of investments. Ronak, sorry, so Shaunak, both of your questions we have addressed in the presentation, wherein pehla to, I myself follow these fundamentals, and each once you have all these portfolios ना, suppose आपके पास emergency fund आ गया 6 to 9 months का, suppose आपने उसको FD बना के रखा हुआ है, सो आपका जो 6 से 9 महीने का जो पैसा है, से ₹1,00,000 है, अगर एफडी का रेट 6% चल रहा है, तो वो आपको 1,00,000 के सामने आप लिख दो 6% इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा, तो दैट इज 6%. देन स्टॉक्स म्यूचुअल फंड में आपको से पीपीएफ में 7.6 मिलता है, तो आपने सपोज ₹1,50,000 डाला है साल में, तो 1,50,000 पे 6% आप लिख लो. गोल्ड बार्स एंड ऑल दिस, इसको तो रिटर्न्स के लिए कैलकुलेट ही मत करो, इसका रिटर्न आप 2% ही लिख लो, ये आपकी सेफ्टी के लिए. SIPs जो रहेंगे वो आप मोर और लेस 10 to 11% का 12% का CAGR पकड़ लो. When you do all this math, you will be able to get the questions which you have, कि रिटर्न मेरा कितना बनेगा, क्या मैं allocate कर सकता हूँ, कितना allocate कर सकता हूँ. और कॉर्पोरेट डिवेंचर्स अवॉइड करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा. आप फिक्स इनकम में जो डाल रहे हो, फिक्स इनकम में बेसिकली आप एफडी, पीपीएफएफ, पेंशन फंड्स, वही सब ज्यादा करोगे तो जाएगा. हम एक्स्ट्रा रिटर्न्स के लिए जाते हैं ना कॉर्पोरेट में, तो हाई चांसेस है कि वहाँ पे रिस्क बढ़ जाती है हमारी. अगर आपको रिस्क लेना, ईटीएफ इज गुड, गोल्ड ईटीएफ आप कर सकते हो, रीट्स कर सकते हो टू अ सर्टेन परसेंटेज. गोल्ड आप 5% से ज्यादा मत रखो पोर्टफोलियो में. ETF you can do Nifty, NSE, Nifty और Sensex ETF, but yeah वो अच्छा रहेगा. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज PPF के सामने हो जाएगा, या गवर्नमेंट में वो टैक्स सेविंग बॉन्ड्स रहेंगे, वो आप कर सकते हो. क्रिप्टो आई एम डाउटफुल. रीट्स यू कैन पुट अराउंड 5%, मैक्स 10% तक जा सकते हो, बिकॉज वहां से इनकम भी आएगा आपको. CAGR रिटर्न ओवरऑल अगर जिस हिसाब से हमने अभी डिस्कस किया हुआ है, सो 12 to 15% का CAGR बनना चाहिए, जो इस हिसाब से, एंड दिस इज विदाउट रिस्क. इतना बिना रिस्क लेके आप शांति से अगर काम करोगे तो 12 से 15% का CAGR आराम से बनेगा. होप दिस हेल्प्स. शौनक, थैंक्स जितेंद्र. थैंक्स. एनीवन एल्स?
Any questions? Be free. Hello. Yes, hello. Thanks, Gavin. Thanks for attending. Okay, then if there are no questions, we come to end of this presentation. Okay, NPS as investment. Okay, so it's a good investment, but the thing is, normally what I prefer is to have liquidity on a side. See, end of the day, NPS has in terms of return perspective and tax saving, you will have that 50,000 extra tax benefit. But what will happen is like आपकी liquidity आपके हाथ से पूरी चली जाती है. ठीक है, वो pension है, important है. ये NPS पुराने जमाने में काफी यूजफुल होता था बिकॉज वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स और काफी सारे स्कीम्स अवेलेबल नहीं थे. आज के जमाने में जस्ट बिकॉज ऑफ 50,000 का टैक्स सेविंग के लिए 6-7 साल की लिक्विडिटी खोना आई वोंट सजेस्ट. माइट एज वेल आपको सेम रिटायरमेंट के लिए चाहिए ना पैसा, आप आरडी बना के उसको छोड़ दो, रिकरिंग डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट बना के, या तो आरडी कर दो बिकॉज एवरी मंथ आपको डालना रहेगा ना, तो आप एवरी मंथ उसको डाल के चलते दीजिएगा उसको, एंड डोंट टच इट टिल यू रिटायर. बट एट द टाइम ऑफ एनी इमरजेंसी प्रोबेबली व्हिच कम्स अप, तभी आपके पास पेंशन में पैसा होगा, एनपीएस में पैसा होगा, बट आप वो एनकैश नहीं कर पाओगे, तब आप कहाँ जाओगे. सो माइट एज वेल हैव लिक्विडिटी ऑन योर साइड. आज के जमाने में अपने खुद के पैसे खुद के पास रहेंगे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू locked in somewhere where even if you have money you cannot use it. Okay, what are your views on NFTs? Again very nascent stage. ठीक है, जब बनेगा तब का तब. अभी आप इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा आप इन्वेस्ट कर सकते हो based on whatever your appetite is. But see, NFTs, cryptos, हमें ऐसा पैसा डालना चाहिए जहाँ से पैसा वापस आना बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी वॉलेटिलिटी कम हो. हम रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमें वी आर नॉट सो बिग कि जैसे प्रोबेबली व्हेन आई वाज इन सिंगापुर, नहीं, so somewhere during 16-17 there was some news article floating over here कि अमिताभ बच्चन ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया. बट अमिताभ बच्चन एज अ फैमिली आर मोर देन लाइक 2500-5000 करोड़ की पार्टी है, उसमें से उसने मेरे ख्याल से हैज इन्वेस्टेड हार्डली 2 या 3 करोड़ एज ऑन अ फैमिली लेवल. उसके लिए 2-3 करोड़ डूबना कोई फायदा नहीं, डज नॉट मेक एनी, इट्स जस्ट नथिंग फॉर हिम. बट हम हमारा पूरा का पूरा पैसा उसमें डाल देते बेस्ड ऑन न्यूज़ कि अमिताभ बच्चन ने भी लिया है. तो नहीं होता वैसा, वैसा पैसा बनना, यानी वी शुड नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन व्हाट अदर पीपल आर डूइंग. वी शुड आइडेंटिफाई आवर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, हमारी जो जरूरत है उस हिसाब से काम करो. NFTs हाँ आगे चल के बढ़ेगा, वो तो क्रिप्टो भी बढ़ ही रहा है जो हिसाब से हमने देखा हुआ है उसे. सो माइट एज वेल अवॉइड इट. Hitendra, any take on the Axis Mutual Fund redemptions which are happening? I mean, huge redemptions are happening in Axis MF. Yeah. So normally, see what happens in this case. Whatever the people who have done over there, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा. आपका जो यूनिट्स है एक्सिस म्यूचुअल फंड में, it is linked to a particular say stocks. मतलब सपोज वो लार्ज कैप फंड में आपने डाला होगा पैसा, एक्सिस म्यूचुअल फंड लार्ज कैप फंड में डाला होगा, तो वो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं है. यानी जहाँ पे पैसा हमारा लगा हुआ है ना, सिर्फ रिलायंस में प्रॉब्लम है ना, ONGC में, HDFC बैंक में, दिस वुड बी द पोर्टफोलियो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लार्ज कैप एक्सिस बैंक लार्ज कैप फंड. अब ये दो बंदे लोग हैं, उनकी वजह से आप रिडम्पशंस कर रहे हो, दैट डज नॉट मेक एनी दिस, बिकॉज या हर्ड मेंटेलिटी की वजह से लोगों को डर लग रहा है कि यस बैंक हो जाएगा. बैंक में पैसा डूबना और म्यूचुअल फंड में लोगों ने करप्शन करना दो अलग बात है. सो आई फील स्टे इन्वेस्टेड, योर मनी इज सेफ, नथिंग विल हैपन टू दैट.
and eventually those people have been removed. और वो लोग अगर अंदर भी रहते, वो लोग ने अलग से पैसा खाया हुआ है. The corruption what they have done, they have received something out of not from your money, but directly from the company or directly from other agent in between. It has not been done through your money, so there is no risk for you. Thank you, Samir. Hope this helps, Ashutosh. Yeah, thank you. Thanks. Any more questions? Okay, if there's no more questions, I thank you once again for attending the presentation. If you need any help, do let me know. And probably we'll share, you can join our Instagram. We will be posting more stuff in terms of more trading essential stuff. And if you need to contact me, you all have my number. You can directly contact me, message me. We'll be happy to help you all. Thank you once again for spending your Sunday 1.5 hours with me. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you.